सो नेक्स्ट थिंग हेयर इज़ आपने डाटा पे हमने पहले कंट्रोल हासिल कर लिया, अब उसकी मुख्तलिफ सबसेट्स भी बना लिए. नाउ नेक्स्ट टास्क इज़ हाउ टू वी वांट टू गेट आइडिया अबाउट द डाटा इटसेल्फ. तो उसके लिए हमें विजुअलाइजेशन चाहिए. उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है और आपने शायद सुना भी हो, मैट प्लॉट लिब. ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट में. तो मैट प्लॉट लिब आप यहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं. मैंने एज ए टोल्डर लिया. तो ये मैटप्लोट्लिब है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इट विल बी इंस्टॉल. मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये पाइथन का प्लॉटिंग पैकेज है. ओके, तो ये इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड. सो आई विल जस्ट import it. import matplotlib. उसमें उसका पर्टिकुलर मॉड्यूल है pyplot और इसको मैं एलियस क्रिएट करता हूँ plt. नॉर्मली लोग plt के तौर पे इसको एक्सेस करते हैं, तो मैं भी आपको plt के तौर पे एक्सेस कर रहा हूँ. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने एक ये आयरिस डाटा सेट यहाँ पे लिया हुआ है और मैं जस्ट यह चाहता हूँ कि आयरिस डाटा सेट को मैं विजुअलाइजेशन करूँ, जस्ट सिंपल, विदाउट considering any other parameter. Okay, so what I will do is rs या सिर्फ प्लॉट और plt.show. plt.show का फंक्शन जो है वो होता है कि जो आपने प्लॉट बनाया उसको शो भी करवाना है. ये एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन इट विल नॉट शो. सो लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट दिस थिंग. तो ये मेरे आयरिस डाटा सेट का विजुअलाइजेशन आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, इसको आप सेव कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, होम पेज में जा सकते हैं, रिपोजिशन कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं. ओके, और फिर बाद में एग्जीक्यूट हो गया बाकी पीस ऑफ कोड. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर ये पीएलटी शो नहीं करेंगे तो आपको शो नहीं करेगा ये, लेकिन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट आपके पास ये था, यू जस्ट वांट टू शो दिस फॉर एग्जांपल. तो हम इसको भी करके देख लेते हैं. f1 और f1 डॉट प्लॉट और plt डॉट शो. चूँकि हमने पहले वाले को कमेंट नहीं किया तो ये पहले वाला एग्जीक्यूट हुआ और ये दूसरे वाला f1 and its class. There are many types of graphs or plots in it. For example, let's say we can also do box plot. Let's do box plot. मैं इसको comment कर देता हूँ so that we don't have to execute it. So this is the box plot of your data. Area, scatter, आप कोई भी plot इसमें कर सकते हैं. ठीक है, और all of this is given here in the very next page of the pandas tutorial. This is plotting. ये डाटा सेट को एक्सेस कर रहा है. ये सिंपल प्लॉट था उनके डाटा सेट पे, क्योंकि उनका डाटा सेट और है तो मेरा और है. इसके अलावा ये सिंपल प्लॉट है, एक वेरिएबल का प्लॉट. आप एक वेरिएबल को एक्सेस करके, जिससे मैंने एक सबसेट को प्लॉट किया था, पीएलटी शो आपने लास्ट में लिखना है. स्कैटर प्लॉट, किसी भी दो वेरिएबल्स को, एक को एक्स में रख दिया दूसरे को वाई में रख दिया, तो स्कैटर प्लॉट हो जाएगा. अगर चाहते तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ. दैट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक हियर. So what we can do is .plot.scatter. अब इसमें आपने एक्स एक्सिस पे एक वेरिएबल रखना है. मैं कहता हूँ f1 और सेकेंडली वाई एक्सिस में रखना है आपने एक वेरिएबल, लेट्स से वैसे f3. ठीक हो गया. And we are just ready to go with that. तो ये इसका स्कैटर प्लॉट.
इसके और भी पैरामीटर्स हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। आप इस पर होवर करेंगे तो इट विल फेच, इसके अभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रहा बट इट कैन फेच इट्स डॉक्यूमेंटेशन। जैसे इसने अल्फ़ा 0.5 किया हुआ है। सो दैट इज़ स्कैटर प्लॉट हो गया। यस, सो ये कि उन्होंने छोटा सा मेथड लिखा है यहाँ पे, ये आपको बता रहे कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एरिया प्लॉट, बार ग्राफ, बॉक्स प्लॉट, डेंसिटी, हिस्टोग्राम, लाइन, पाई, स्कैटर, ये सारे बॉक्स हैं। ये बॉक्स प्लॉट है जो अभी मैंने आपको बॉक्स प्लॉट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लॉट डॉट बॉक्स भी कर सकते हैं, दोनों से आपको रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक है, एरिया ग्राफ है, इसमें सब प्लॉट्स ऑन किए हुए हैं। तो एरिया प्लॉट में जस्ट आपने फिगर का साइज़ देना होता है, फिगर का साइज़ नहीं भी देंगे तो सब प्लॉट्स जस्ट ट्रू कर दें तो इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, इफ़ यू वांट टू, आप इसको एक एरिया प्लॉट भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट दिस थिंग एज वेल। डॉट प्लॉट डॉट एरिया। ओके, सो इसको प्लॉट करते हैं। सो दिस इज़ द एरिया। मैंने इसमें कोई इजाफी पैरामीटर, कोई एडिशनल पैरामीटर नहीं दिया। ठीक है, फिल वक्त, लेकिन आप दे सकते हैं। आप सब प्लॉट्स अगर इसको ट्रू कर देंगे, सॉरी, so you can see each feature has been plotted individually. पिछले वाले में सारे मर्ज करके कर रहे थे। तो सो दिस इज़ वेरी पावरफुल टूल मैटप्लॉटलिब। और अगर आप इसकी API को यहाँ पे एक्सेस करें, विच इज़ दिस, सो आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, एग्जांपल्स मिल जाएंगी, प्लॉट टाइप्स मिल जाएंगी। आप ये देख सकते हैं, इट्स वेरी कैची, मतलब यू मस्ट ट्राई दीज। और इसके ट्यूटोरियल्स में वन थिंग यू नोट दैट यू हैव सम इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल के लिए ट्यूटोरियल है यहाँ पे, एडवांस लेवल यूजर्स के लिए। उसके अलावा कलर्स, टेक्सचर, टूल किट्स, ये सब कुछ तो आप कर ही सकते हैं। I was just going through this link, animation using Matplotlib. Just look at this, what it can do. For example, this. ठीक है, चलिए, आपने अक्सर ये ट्रेंड्स वाली वीडियो देखी होगी। ठीक है, कि ईयर वाइज जो है ट्रेंड कैसे इंक्रीज कर रहे हैं किसी चीज़ के। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। उसके अलावा आप इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्राई कर सकते हैं। ये सारे प्लॉटिंग मेथड्स हैं। सो इट्स अ वेरी बिग लाइब्रेरी, और इसमें आप इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू। देखें, ये मैंने अभी डाटा जो है ना एक ही डाटा सेट से लिए। ठीक है, आप दो मुख्तलिफ डाटा सेट से सिमिलर चीज़ों को कोरिलेट करके मतलब विजुलाइज करना चाहते हैं, तो आप इनको एरिया प्लॉट या कोई भी ऐसी चीज़ ड्रॉ करके स्कैटर प्लॉट को के थ्रू आप उनको आपस में मैप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाउ डज दैट लुक लाइक। सो इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं। इट इज़ अ वेरी comprehensive library, or there are many plot types. If you see the plot types, scatter plots, stem, step, stack plots, and you can see these these are very contour, quiver, barbs. Look at these are statistical plots, even plot, histogram, hexbin, this plot here. By unstructured coordinates के लिए ये है tricontour, tricontour, and they are 3D as well, which you normally see in MATLAB and many other. But for this, they are very very easy. Once you have hold of data, it's just a piece of cake. तो आप इसमें से इंडिविजुअली कोई भी ट्राई कर सकते हैं। जितना आपके पास डाटा सेट डाइवर्स होगा, बड़ा होगा, उसमें विजुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंस भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। राइट नाउ आई एम यूजिंग सिंपल डाटा सेट, सो इट्स कंपैरेटिवली वेरी इजी टू कोऑर्डिनेट। ठीक है,
सो ये प्लॉटिंग हो गई यहाँ तक। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर वेलकम टू आस्क।